Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे साइक्लोट्रॉन विषय रे पढ़िबा देखो साइक्लोट्रॉन होउची गोटे पार्टिकल एक्सेलरेटर व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट heavy charged particles like your protons deuterons alpha particles आ याकू डिजाइन करथिले प्रथमे E.O. लॉरेंस जे कि जणे अमेरिकन फिजिसिस्ट थिले तांको सहित M.S. लिविंगस्टोन ओके से भी जणे अमेरिकन फिजिसिस्ट थिले इन द ईयर 1934 एट बार्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तो यार प्रिंसिपल होची इट इज that the charged particle can be accelerated to large kinetic energy by making it pass through a high frequency electric field again and again okay by using strong magnetic field गोटे strong magnetic field यूज करिकी आमे charged particle को accelerate करि परिबा to larger kinetic energy आउ से high frequency electric field को आमे बारंबार पास करिबा से particle को okay so the frequency of revolution of this charged particle in a magnetic field is independent of its energy let us now see the construction part of this cyclotron okay यार construction को एठी point wise मु एठी figure रे बुझौछि तो देखो प्रथमे आमे देखिबा एठी D1 आउ D2 एटा होछि दुईटा hollow metallic half cylinder ओके एटी प्लानर स्ट्रक्चर जदि आमे देखिबा एटा इंग्रजी अक्षर डी भलिया यार शेप ओके याको आमे डी बोली की कहबा डी ई ई ओके सो दुईटा एमथी डीज अछि आउ एक्चुअली द डीज आर two portions of a cylinder which is cut vertically and because of their shape as these half cylinders represent the shape of alphabet D जेमति कहली तेणु करी आमे ताकू डीज बोली की कहबा डी ई ई एस ओके प्लुरल रे नाउ द डीज आर केप्ट horizontally with their diametric edges parallel and slightly separated from each other as shown in figure ओके ए दुईटा जो डीज अछि तो तांको भितरे गोटे गैप रहउची ओके दे आर स्लाइटली सेपरेटेड ए जो गैपटा एठी देखुछो ठीक अछि अच्छा नाउ ऑन अकाउंट ऑफ shielding effect of the D's the space between them is actually the region of zero electric field तापरे रहउची गोटे हाई फ्रीक्वेंसी oscillator okay the D's are connected to high frequency by HF oscillator which provides a high frequency of the order of 10 to the power 7 hertz okay and potential difference as high as 10 to the power 6 volt okay it can be set up across the D's तापरे देखो तळे गोटे सोर्स रहउची S okay so that positively charged particles are produced in a separate chamber and they are placed in the space between the D's at midpoint of the gap ए जो गैप रो मिड पॉइंट रे हमें याकू प्लेस करी की रखी परिबा तापरे देखो तळे ऊपरे हमें दुईटा पोल पीसेस देखिबा को पाउछु साउथ पोल और नॉर्थ पोल सो एटा गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो फील्ड क्रिएट करूची सो एई पोल पीसेस द्वारा हमें गोटे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पाउछु B ओके अच्छा this magnetic field B actually is provided by a strong permanent magnet जेमति कहली नॉर्थ पोल और साउथ पोल और electromagnet which is placed perpendicular to the flat faces of the D's okay ए जो D's रो flat faces सहित perpendicular है कि हमें प्लेस करिकी रखिबा अच्छा याको एबे यार फिगर को देखो ए हिसाब रे हम यदि देखिबा ताले आ गोटे जिंस नोटिस करो एठी देखो जो डीज मु कहउतली
एटा गोटे डी राइट साइड एटा गोटे डी लेफ्ट साइड आउ ए जो पार्टिकलटा कौन हम यही सोर्स रु एमती घूरी 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 गोटे स्पाइराल वे रे शेष में जो हाईली एक्सिलरेट होगी यही बाटर पलि आसब टुवर्ड्स द टार्गेट ओके आउ तले देख फिगर रे या आम कौन करो डीज आउ पूरा सेटअप को गोटे वैक्यूम चैम्बर रखुचु ओके वैक्यूम चैम्बर the two Ds are enclosed in a highly evacuated or vacuum metal container or chamber to minimize the collisions between the charged particle and the air molecules. So vacuum रे रखिला माने collision टाको आमे minimize करि परिबा and the chamber is evacuated to a pressure of about 10 to the power minus 6 mm of mercury okay and the Ds are well insulated from this chamber ओके आउ एठी देखो वैक्यूम पंप द्वारा आमे कौन करूँ एठी पूरा को इवाकुएट करि परिबा ठीक अछि अच्छा तापरे पुणी ऊपर फिगर को आसीबा एठी देखो जो P1 P2 दुइटा देखि परछो याको आमे कहबा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ओके so that the accelerated charge particles are pulled out of the Ds by deflecting plates ओके एई बाटरे एई जो P1 P2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स अच्छे यही बाटे एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स बाहर को पड़े आसब ओके सो दे आर पुल्ड आउट ऑफ द डीज बाय दीज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स व्हिच आर गिवन इक्वल नेगेटिव चार्ज थ्रू अ विंडो ओके तापर शेष रे रहउची गोटे टार्गेट ओके जो टार्गेट रे चार्ज पार्टिकलटा actually hit karibo the charge particle after passing through the deflecting plates is directed to fall on the target and due to the high speed of the charge particle because eta accelerate hei sarthibo tebe jai ki baharibo so the atoms of the targets are smashed pura puri mane bichurito hei jibe they are smashed into fragments or pieces okay so this is your construction of cyclotron एठी आ गोटे जिनस भी कहूँ जे ये जो दुईटा डीज देखुच तार आम देखला जे फ्लैट सरफेस को परपेंडिकुलर रोचे जो हमर मैग्नेटिक पोल पीसेस सो एठी जो एक क्रॉस मार्क दिया जाइए सो एठी कहूँ कौन ना मैग्नेटिक फील्ड होची इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ओके माने परपेंडिकुलर होची आउ तम मुहरु टुवर्ड्स द स्क्रीन और टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो कंस्ट्रक्शन पार्ट जानिला पोरे एबे देखिबा ई साइक्लोट्रॉन केमती तार वर्किंग करूची सो सपोज आमे कहिला जे गोटे चार्ज पार्टिकल ताकू आमे प्लेस करिकि रखिबा एट द सेंटर ऑफ द गैप ओके इन द 2Ds and let it be subjected to the electric field and magnetic field simultaneously okay now if the first D that is D1 is at negative potential ताले कौन हम पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड बिकॉज पार्टिकल होची पॉजिटिव सो एटा D1 आड़ को अट्रैक्ट हम नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल विल कवर a semi-circular path and will reach the gap again okay so that the potential difference of high frequency oscillator is adjusted in such a way that the time taken by the particle to cover one semicircle across the D must be equal to half the time period of oscillator जो हिसाब रे जनरेट करूची तार जो टाइम पीरियड रोची तार अधा हेबा कथा से हिसाब रे जिते टाइम ये कवर करबा को सेमी सर्कुलर पाथ को नउची ओके अच्छा with this moment the charge particle reaches the gap between the two Ds and acquire thereafter the polarity of the Ds automatically reverses okay so the second D2 which was positive before आगरो एटा जोटा पॉजिटिव थिला एबे कोन होई जिवो ना पोलारिटी टा जेहेतु कहूची एठी रिवर्स हे गला तेनु करी इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज नाउ ओके सो पार्टिकल पुणी एबे या प्रति अट्रैक्ट हबो ओके द पार्टिकल विल अगेन कवर अ सेमी सर्कुलर path through the second D2 and reach again the empty space again okay so the particle in this way gains some speed every time as it reaches the gap between the two Ds okay दुईटा D रो गैप रे जते जते थर से पहुँचुथबो तार एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाउथबो और आमे कहि परबा ये एक्सिलरेट हेई हेई जिवो
Thus, every time when the particle reaches the gap, the electric field is reversed. ତେଣୁକରି जो ଏଠି ରିଭର୍ସାଲ ହେଇଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡର, ସୋ ଯେଉଁ ଡିଟା ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଇଥିବ ସେଇ ଡି ଆଡ଼କୁ ପାର୍ଟିକଲଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ. The particle receives a push and finally it attains a very high velocity, and this process continues till the particle reaches near the edge of the D. Okay, so ये जो फिगर आमे देखिला ऊपरे पुणी से फिगर को आसीबा. सो देखो एठी जदि आमे देखिबा सेंटर रु प्रथमे स्टार्ट हैला. ओके, स्पाइराल भलिया यार मूवमेंटटा चलीची. ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘୁରି 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 ଘୁରିକି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଇଏ ବାଟରେ ଇଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ. ଠିକ୍ ଅଛି. and this process ଯେମିତି କହିଲି continues till the particle reaches the near the edge of the D system, and at this stage the deflecting plates जो ଅଛି P1 ଆଉ P2, okay, it deflect the positively charged particles through a window and thereafter it hits the target. Okay, so this is all about the working part of the cyclotron. Now let us see the theoretical part of this cyclotron. So देखो जदि आमे लॉरेंज फोर्स कहबा जोटा कि गोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थाए तार आ गोटे मैग्नेटिक कंपोनेंट थाए. सो ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स which is acting on the positively charged particle having mass m और charge q moving perpendicular to the applied field. Okay, it is given by fm जदि वेक्टर रे कहबा ताले q into v cross b हेई थाए. सो एठी देखो पार्टिकल टा जेतु एमती रेडियली मूव करूची ताले at any point the velocity is along the tangent. आउ मैग्नेटिक फील्ड आमे देखिला एटा होची परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. सो v आउ b भितरे एंगल टा हिजिबो 90 डिग्री. तेणु करी मैग्नीट्यूड रे fm is equal to qvb sin 90 or simply qvb हेगला. Okay, now this magnetic Lorentz force provides the necessary centripetal force in order to allow the particle to move in a circular path, okay, along the radius r. Okay, a centripetal force माने आमे जानिछु it is the force acting towards the center. So equilibrium रे कोन हबो एई magnetic Lorentz force टा equal हे जिवो तमरो centripetal force सहित. तेणु करी qvb is equal to centripetal force रो वैल्यू आमे जानिछु mv square by r हे थाए. ताले एई दुई जो टर्म आसिला सेतुरो आमे रेडियस रो वैल्यू पाई गला r is equal to mv by qb और velocity v is equal to qbr by m. एबे जदि आमे कहिबा जे स्मॉल t हे गला टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर अ semicircle of radius r inside the d through a distance half the circumference of the circle. ताले याको आमे लिखि परिबा टाइम हैला डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी एटा तो आमे जानिछु. सो एठी डिस्टेंस कवर्ड हे गला जेतु हाफ होउची तेणु करी हाफ द circumference. Okay, so एठी हे गला 2 pi r हे गला फुल circumference. तेणु एठी आमे हाफ नै गला तेणु करी pi r divided by v रो वेलोसिटी जोटा आमे ऊपरे वैल्यूटा पाइथिला ताकू पुट कर दबा. सो शेषरे आसी गला सॉल्व हे कि pi m by qb एटा आसी गला तमरो जो टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल. So the above equation shows that the time taken by the particle to cover one semicircle is independent of the speed v and radius r. Okay, एठी v और r रो किछि भी टर्म ही आसु नाही. Okay, और डिपेंड करछि कहा ऊपरे ना मैग्नेटिक फील्ड b ऊपरे ता सहित the amount of specific charge q by m ऊपरे of the particle. Okay, suppose एबे कहबा हमें कैपिटल T हे गला टाइम पीरियड of the oscillator, then as per cyclotron's resonance condition जोटा हमें देखिला एटा जहाँ हेले भी ए जो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल तार अधा हेबा कथा. ओके, सो a time taken t by the particle to cover one semicircle should be equal to half the time period of the oscillator. तेणु करी small t must be equal to capital T by 2 or capital T equal to 2t or 2 pi m by qb, which is a constant. Okay, hence we can say the time taken by the charged particle to cover any semicircle irrespective of its radius is always same because constant रहुछि. So every time
जेहेतु समान टाइम नौची है गोटे सेमी सर्किल को कवर करने सो एवरी टाइम व्हेन अ पार्टिकल रीचेस द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द डीज with increase in the radius because gap रे once पहुंची गला माने एबे radius टा increase करिवो so the speed of the particle also increases okay because radius जदि increase कला ताले ए जो speed बा velocity मध्य increase करिवा को पड़िबो in order to maintain the time constant okay because the time t is constant এই জিনিসটা ঠিক কইলা so velocity is directly proportional to r thus the charge particle is accelerated okay so this is the working এই cyclotron रो एबे आमे frequency मध्य बाहर करि परिबा आमे जानिछु frequency is the reciprocal of time period so cyclotron frequency is also known as magnetic resonance frequency f and it is given by एमती कहली 1 by t reciprocal of time period so value पके देले आसीगला qb by 2 pi m आ angular frequency गला 2 pi f so qb by m एटी 2 pi कैंसिल हो जिवो ओके तापरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माने ये जो चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड याको आमे पाई परिबा जेतोले ऑब्वियसली वेलोसिटी मैक्सिमम हेबो ओके बिकॉज मास तो कांस्टेंट अछि सो मैक्सिमम वेलोसिटी केतेबेले होउची ना नियर द एज और पेरिफेरी ऑफ द डीज ओके सो सेही जगह रे ही तार वेलोसिटी सबुठु बेसी सो दैट काइनेटिक एनर्जी सबुठु बेसी रहइबो ओके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सपोज v0 जो नेला ताले हाफ m v0 स्क्वायर ओके accordingly value आमे पुट कर दबा so at the edge this radius r will also be maximum so एठी r जगह रे आमे r max बोली के लिखिछु so एरो वैल्यू आसिला q square p square r max square divided by 2m okay so this is all about your working part of the cyclotron let us now see the use of cyclotron देखो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन फर्स्ट पॉइंट रे कहूची साइक्लोट्रॉन को आमे यूज करिकी न्यूक्लियर रिएक्शन रे हाई स्पीड और हाई एनर्जी पार्टिकल्स पाई परिबा which act as bombarding particle to carry out nuclear reaction for the production of new elementary particles second point रे कहूची साइक्लोट्रॉन को आमे यूज करि परिबा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू सॉलिड्स ओके सॉलिड देह रे इम्प्लांट करिकी आमे तारो प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करि परिबा ओके थर्ड पॉइंट रे एबे हॉस्पिटल रे भी आमे एटा साइक्लोट्रॉन को यूज करि परिबा फॉर प्रोडक्शन ऑफ radioactive nuclei as cyclotron requires a modest potential difference for producing high energy particles fourth point रे कहला जे accelerated charge particles actually they are used in artificial transmutation of elements okay अच्छा तापरे एटी लिमिटेशंस किछि मध्य रहउची ए साइक्लोट्रॉन रो जेमति कि फर्स्ट पॉइंट रे कहउची साइक्लोट्रॉन cannot accelerate heavy charge particles at limitless speeds okay this is because when the speed of positively charged particle becomes comparable to the speed of light माने 3 into 10 to the power 8 meter per second which is c so ताले कोन हे जिवो mass जो particle रहइबो it changes with the speed in accordance with the Einstein's special theory of relativity so it is relativistic mass टा आसीगला m equal to m0 by square root of 1 minus v square by c square एठी m0 हेगला रेस्ट मास जानिछो तमे आ m जेमति कहली relativistic mass c हेगला velocity of light तणु जेतेबेले ई mass vary करिवो with respect to velocity ताले the expression for the time taken by the particle in order to cover one semicircle एटा एबे टिके चेंज हि जिवो सो t रो वैल्यू जोटा हमें पाउथला pi m by qb एटी m जगह रे हमें m0 by square root of 1 minus v square by c square put कर दबा okay and as the velocity v increases so that the time taken t also becomes variable okay and this time t changes so that the cyclotron resonance condition will not be satisfied thereafter okay so ये जो resonance condition थिला small t equal to capital T by 2 सेटा आउ satisfy हेई परिबो नाही they become unequal so in other words the time taken t to cover a semicircle is not equal to half the time period of the oscillator okay hence when this time small t is no longer constant
then the polarity of the D's will not get reversed. Okay, constant जेहेतु टाइम आ रहा नहीं तेणु D जो दुईटा रख जो पोलारिटी रिवर्स होता सो दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकलटा नेगेटिव D आड़ को अट्रैक्ट होता सेटा हो पार नहीं. सो एज द पार्टिकल रीचेस द एम्प्टी स्पेस जो दुईटा D रो जो गैप रे पहुँची गला परे ताहले आउ पोलारिटी चेंज हेबो नहीं. ताहले एबे कोन हेबो therefore the particle cannot be accelerated beyond a certain limit in a cyclotron. गोटे पर्टिकुलर लिमिट पर्यंत ही हमें पार्टिकल को एक्सेलरेट करि परिबा. तापरे नेक्स्ट पॉइंट रे कहूची cyclotron cannot be used to accelerate electrons because the mass of electron is very small. Okay, mass of electron हमें जानिछु 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So it is very small. So due to this lower mass, electrons move with unusually high velocity, which are out of step with the oscillating field due to the relativistic effects. तेणु इलेक्ट्रॉन रो एक्सेलरेशन आमे करि परिबा नहीं by using cyclotron. आउ फोर्थ पॉइंट रे कहला cyclotron cannot accelerate uncharged particle माने neutral particle like neutron याकू भी ये accelerate करि परिबा नहीं. Finally, a point to remember, it is the electric field which accelerate the charged particle in a cyclotron. A magnetic field actually it does not change the speed. तो कौन करिथा magnetic field? It only makes the particle to cross the electric field again and again. Okay, so charge particle को accelerate करिवार मुख्य कॉस्टा होची ए इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड केवल तार जो पार्टिकल को क्रॉस करेबो ए इलेक्ट्रिक फील्ड को बारंबार. ओके, अगेन एंड अगेन. ओके, थैंक यू.